ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नित्यानन्दाहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूता शिरोमणि। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। We would like to thank the sound master for perfect sound today. Haribo. Finally, he has achieved it. So, B. Narasimha Prabhu will arrange a garland for him today. Sound is so purifying. ध्वनि बहुत ही पवित्र करने वाली है। Srimad Bhagavatam states that the sound of the flowing river, it purifies and elevates the mind. श्रीमद् भागवतम कहती है कि बहती हुई नदी की ध्वनि यह हमें पवित्र करती है। Sound is so powerful. ध्वनि कितनी शक्तिशाली है। Srila Prabhupada said, with this sound of a helpless calling of a child, we must chant the Hare Krishna mantra. श्री प्रभुपाद ने कहा कि एक असहाय बच्चे की तरह हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। And no matter how interesting would be the drama, how enlivening will be the lecture, and how tasty would be the prasadam. और चाहे कितना भी अच्छा नाटक हो और कितना भी रोमांचित करने वाली कथा हो या फिर कितना भी रुचिकर प्रसादम हो, if the child cries, the mother has to get up. अगर बच्चा रोता है तो माँ को अवश्य खड़ा होना पड़ता है। Only when we become parents we realize how much we owe to our parents.
जब हम माता पिता स्वयं बन जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम अपने माता पिता के कितने ऋणी हैं। A devotee is not indifferent to the material relationships. एक भक्त भौतिक संबंधों के प्रति कभी भी उदासीन नहीं होता है। A devotee understands that all the material relationships are temporary, but so long they are there, they are meant to help us enhance and come more closer to Krishna. और भक्त यह सोचता है कि जो भौतिक संबंध है वह यद्यपि क्षणिक हैं, लेकिन वो हमें भगवान के साथ अपने संबंधों को जागृत करने में सहायता कर सकते हैं। We are so grateful to our parents, to our brothers, to our sisters, to everyone for helping us give a wonderful facility this material body so that we can execute Krishna consciousness. और हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन इन सभी के प्रति कृतज्ञता अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये शरीर प्रदान किया जिसको हम भक्ति के लिए उपयोग में ला सकते हैं। But somehow this consciousness of have not does not let us really appreciate and be grateful for what we have in our life. लेकिन किसी कारण से यह न प्राप्त होने की जो हमारी चेतना है, यह हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। Today in the morning we were doing exercise of all of you being trained to really think about what is the best thing, good thing that happened in your life. और आज प्रातः काल में हमने एक अभ्यास किया था यह सोचने का, यह ध्यान करने का कि हमने हमारे जीवन में पिछले कुछ समय में क्या-क्या अच्छी घटनाएं हुई हैं। In material circle also there is lot of talk about gratitude. और भौतिक के सर्कल्स में भी कृतज्ञता के प्रति बहुत सारी बातें की जाती हैं। There are more than 1,000 titles written by materialistic authors on gratitude. और हजारों से भी ज्यादा लेख लिखे गए हैं उन भौतिक लेखकों के द्वारा कृतज्ञता के ऊपर। But those materialistic people, they understand the value of gratitude, they understand the principle of gratitude, they do not derive the maximum and complete benefit of this principle. यद्यपि भौतिकतावादी ये लोग समझते हैं कि कृतज्ञता का सिद्धांत क्या है, लेकिन इससे जो सबसे सर्वोच्च लाभ है वह उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। Because they disconnect the gratitude from the person. क्योंकि वो कृतज्ञता को व्यक्ति से भिन्न कर देते हैं। They call it gratitude to the energy. और वो कहते हैं कि हमें ऊर्जा के प्रति कृतज्ञ रहना है। For them, everything is an energy. और उनके लिए प्रत्येक वस्तु एक ऊर्जा है। Even the person is emanating positive energy. और यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी उनके लिए एक अच्छी ऊर्जा का संचार कर रहा है। I went to a person who happens to be a Reiki specialist. और मैं एक व्यक्ति के पास गया जो रेकी में विशेषज्ञ थे। And he said, Swamiji, you have so much of positive vibes. और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके अंदर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है। And for almost 10 minutes he was just appreciating the positive energy. और 10 मिनट तक वो सकारात्मक ऊर्जा की बड़ाई करता रहा। And I was thinking, what about me who am possessing the energy? और मैं सोच रहा था मेरी पीड़ा क्या जिसके पास ये ऊर्जा है। I know I have to be humble, but not that much in front of the energy. मुझे पता है कि मुझे भी विनम्र होना है, लेकिन ऊर्जा के सामने इतना नहीं। So materialistic people, they think gratitude is just a positive vibration which creates positive energy. और भौतिकतावादी लोग
कृतज्ञता को एक सकारात्मक कंपन वाइब्रेशन समझते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। But gratitude is not a positive vibration. लेकिन जो कृतज्ञता है वो कोई सकारात्मक तरंगे नहीं है। Gratitude is the most personal expression of our heart to the person who has done something for us. और जो कृतज्ञता है वो हमारा व्यक्तिगत एक्सप्रेशन है। उसकी आवाज Just relax. अभिव्यक्ति है ये हम Relax. Just relax. Why did you make sound? So this is the most personal expression of our heart for love and for what we have received from a person. और यह हमारी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है इस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। Who can do more than what Krishna has done for us? और जो कृष्ण ने हमारे लिए किया है उससे अधिक कोई क्या कर सकता है हमारे लिए? We feel hungry, Krishna has given us food. और यदि हमें भूख लगती है तो कृष्ण हमें भोजन दे देते हैं। We want entertainment, Krishna has given us such wonderful leelas. और यदि हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है तो भगवान इतनी मनोरंजक लीलाएं हमें दे देते हैं। How many of you enjoyed the drama today? Just imagine, the drama is so enlivening. How wonderful it would be when we join the leelas in Vrindavan. कल्पना कीजिए कि केवल उसका जो नाट्य मंचन है वो इतना मनोरंजक है तो भगवान की लीलाएं कितनी मनोरंजक होंगी। So Krishna actually has arranged all these gifts for us. तो भगवान ने हमारे लिए ये सारे उपहार समेट के रखे हैं Personally. व्यक्तिगत रूप से। But somehow or other, because Krishna remains hidden within our heart, it becomes so difficult to experience Krishna's presence in our life. लेकिन इसी कारणवश क्योंकि भगवान हमारे हृदय में इतने छिपे हुए रहते हैं तो हम भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। Yesterday we were discussing about Parikshit Maharaj. It was so easy for Parikshit Maharaj because Krishna was visible in front of his eyes. और कल हम परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा कर रहे थे क्योंकि परीक्षित महाराज के लिए यह आसान था क्योंकि कृष्ण उनकी आंखों के सामने थे। And his grandfather Arjuna, whose story is there in the PDF that is shared to us. Arjuna, when Krishna left Dwaraka to enter again back into the spiritual world, Arjuna was so grief-stricken. और जो उनके दादाजी थे अर्जुन, जब भगवान कृष्ण द्वारका से अपने धाम वापस चले गए तो अर्जुन कितने दुखी हो गए थे उनके जाने के कारण। Arjuna returned back to Hastinapur like a ghost haunted person. और अर्जुन हस्तिनापुर में ऐसे लौटे थे जैसे कि कोई भूत से प्रभावित होकर आया हो। His face had become pale. He had lost all composure, as if he is completely in depression. और उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनके शरीर का जो चेतना थी वो समाप्त हो गई लगती थी, जैसे कि वो पूरी तरह अवसाद से ग्रस्त हो गए हैं। And generally, I have met people who are depressed. Generally, when you are depressed, you keep on complaining.
और Yes. मैंने साधारणतः देखा है लोगों को कि जो अवसाद से ग्रस्त होते हैं वो हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं। Complain, criticizing, quarreling, these are symptoms of a person who is undergoing depression. और शिकायत करना, लोगों की निंदा करना और लोगों से लड़ाई करना, ये सब अवसाद के लक्षण हैं। The diseased mind is always trying to complain. जो रोगी मन होता है वो हमेशा शिकायतें ही करने की कोशिश करता है। Though externally Arjuna in Srimad Bhagavatam it is explained he had lost all composure, his face had become pale, but in that matter he was glorifying Krishna. और श्रीमद् भागवतम बताती है कि यद्यपि अर्जुन के शरीर की जो रंग था वो उड़ चुका था और वो अवसाद से ग्रस्त थे, लेकिन उस अवस्था में भी वो भगवान का गुणगान कर रहे थे। Arjuna is the super warrior of Kurukshetra. अर्जुन कुरुक्षेत्र के एक महानतम योद्धा थे। This Israel, Iran and Ukraine and Russia and India and Pakistan, whatever wars you are seeing, this is just like gilli danda for Arjuna. और आप जो युद्ध आज के समय में देखते हैं, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब उस युद्ध के सामने गिल्ली डंडे के समान थे। Arjuna was so powerful that he made all the gods and the demigods wonder, oh, what a warrior is he. और अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सभी देवी देवताओं को आश्चर्य में डाल दिया कि कितना महान योद्धा है ये। But the same Arjuna, he was trying to protect the queens of Dwaraka when Krishna left back to spiritual world. लेकिन वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण द्वारका से अपने धाम चले गए तो उनकी रानियों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। Arjuna was carrying all the 16,100 queens of Dwaraka back to Hastinapur so that they can peacefully stay in Hastinapur for remaining of their life. और अर्जुन भगवान कृष्ण की 16,100 रानियों को हस्तिनापुर वापस लाने का प्रयास कर रहे थे ताकि वो आराम से हस्तिनापुर में रह सकें। But on the way there were some cowherd boys like Madhumanga. लेकिन रास्ते में उनको कुछ गोपाल मिले जो मधुमंगल की तरह थे। And they said that these queens are our queens. और उन्होंने कहा कि ये रानियां हमारी रानियां हैं। And there was a fight. और वहां पर एक युद्ध हुआ। And they were having gilli danda. और उनके हाथ में गिल्ली डंडा था बस। That's what the cowherd play in Vrindavan. यही जो है गोपालक होते हैं वृंदावन में खेलते हैं। Arjuna with all his Pasupati Astra, Brahmastra, Narayan Astra, Agni Astra, this Astra and that Astra was defeated by gilli danda of the cowherd boys. और अर्जुन जिनके पास पशुपति अस्त्र, नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, इस अनेक प्रकार के अस्त्र थे, वो इन गिल्ली डंडा वालों से हार गए। Arjuna was topper from child. और अर्जुन थे वो सबसे ज्यादा फ्लॉप हो गए। He left the place and he gave you some blessings. Yes, stop. My Gurudev said, one time one devotee was introducing me, Maharaj, he is being topper from birth, topper and topper, topper in 10th, topper in 12th, topper in IIT. I was feeling something will definitely come. गुरु महाराज के सामने एक भक्त मेरा परिचय करवा रहे थे कि बचपन से टॉपर रहे हैं, हमेशा टॉप किया है इन्होंने, तो मुझे पता था कि महाराज कुछ कहने वाले हैं। And I still remember in Albert Road guest house, guest room, Maharaj said, oh, you are topper from childhood. Let me tell you something which will really be good for you.
तो महाराज ने कहा कि आप बचपन से टॉपर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपको वास्तव में लाभान्वित करेगा। And just to make it generalized, Maharaj, not specific to me, Maharaj said, how do all of you, he didn't say me because he wanted to really not, how do all of you spell the word top? तो महाराज ने उसको जनरलाइज किया ताकि मुझे बुरा न लगे, तो महाराज ने कहा कि आप जो टॉप शब्द है उसको कैसे आप लिखते हैं? T-O-P, top, we all recited. हम सब कह रहे हैं, हमने कहा T-O-P. And Maharaj said, if you want to balance your ego because you are in the top, you need to wash P-O-T pot every day. महाराज ने कहा कि यदि आप टॉप करना चाहते हैं T-O-P, तो आपको प्रतिदिन P-O-T पॉट्स को यानी बर्तनों को धोना चाहिए। Now Arjuna was in the top. और अर्जुन हमेशा सर्वोच्च थे। No fight he fought in which he failed. और कोई भी ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें उन्होंने मात खाई हो। The only opponent that Arjuna had was Karna, whom there was some chances that he could get defeated. उनका केवल एक विरोधी था, कर्ण, जिसके पास थोड़ी सी क्षमता थी कि वो उनको हरा सके। But because of Krishna's blessing, Arjuna was victorious over Karna. और लेकिन कृष्ण के आशीर्वाद के कारण अर्जुन कर्ण के ऊपर भी विजयी हुए। And here is Arjuna, who is in the top in the entire universe in martial arts, in archery, is being defeated by some cowherds who are holding sticks. और यहाँ वो अर्जुन जो कि इस युद्ध की कला में और धनुर्विद्या की कला में सर्वश्रेष्ठ थे सारे संसार में, वो इन कुछ ग्वालों के बिल्ली डंडों से हार गए। It is just like Albert Einstein is being defeated by a physics problem given by a KG student. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत महान वैज्ञानिक है, वो किसी बच्चे केजी कक्षा के बच्चे द्वारा फिजिक्स की किसी समस्या को लेकर हार गए हैं। Arjuna was in great depression. अर्जुन महान अवसाद की अवस्था में थे। And he returned back to Hastinapur empty-handed, and Yudhishthira Maharaj asked Arjuna, what is the reason? Why you are so pale? और जब वो हस्तिनापुर में खाली हाथ लौटे, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि तुम इतने पीले क्यों पड़ गए हो? Generally, who goes through such defeat and failure in life would complain, would speak blunt out, grudging words. साधारण न्याय संसार में यदि किसी की इस प्रकार पराजय हुई हो, तो वह बहुत सारी शिकायतें करेगा, अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करेगा। But Arjuna, with all those things, expressed his heart through wonderful glorification of Krishna's gifts to him. लेकिन अर्जुन ने ये सब होते हुए भी भगवान कृष्ण के गुणगान के द्वारा अपने हृदय को अभिव्यक्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter and 7th number verse, given in the PDF, so all of you can open the PDF. PDF का दूसरे नंबर का पृष्ठ आप खोलिए, उसमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। यत् संशयात् द्रुपद गेहमुपागतानां। यत् संशयात् द्रुपद गेहमुपागतानां। राज्ञं स्वयंवरमुखे
स्मरदुर्मताना भाग्यं स्वयं वरमुखे स्मरदुर्मताना तेजोहृतं खलु मया विहिताश्च मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्संशया द्रुपदगेहमुपागताना राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदाना तेजोहृतं खलु मया विहिताश्च मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा Only by his merciful strength was I able to vanquish all the lusty princes assembled at the palace of King Drupada for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow I could pierce the fish's target and thereby gain the hand of Draupadi. केवल उनकी ही कृपा की शक्ति के द्वारा मैं द्रुपद की सभा में उपस्थित सभी कामुक राजकुमारों को पराजित करने में सफल हुआ और मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया। मैंने अपने धनुष और बाण के द्वारा जो मछली का लक्ष्य था उसका भेदन किया और द्रौपदी का हाथ प्राप्त किया। Because he was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven Indradev. क्योंकि वह मेरे करीब स्थित थे, इसी कारण मेरे लिए संभव था कि मैं स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को भी अपने बल के द्वारा पराजित कर पाया। And thus enable the fire god to devastate the Khandava forest. और जो अग्निदेव थे, उनको खांडव वन को जलाने के लिए विवश किया। And only by his grace was the demon named Maya saved from the blazing Khandava forest. We could build our assembly house of wonderful architectural workmanship. और उनकी ही कृपा के कारण हम माया दानव को उस खांडव वन की अग्नि से बचा सके और जिन्होंने हमारे लिए सुंदर महल का निर्माण किया। Your respectable younger brother who possesses the strength of 10,000 elephants. आपका जो अनुज जिसके पास 10,000 हाथियों के बराबर बल है, killed by his grace Jarasandha, whose feet were worshipped by many kings. उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा ही जरासंध को का अंत किया। It was he only who loosened the hair of all the wives. ये उन्हीं के कारण था कि उन्होंने who dared open the cluster of your queen's hair, which had been nicely dressed and sanctified for the great Rajasya Yajna. Yono Chukopavana Etya Duranta Kritsra Durvasaso Arirachita Dayutagra Bhugya Sakananam Sistamupayujya Yata Striloke Tripta Mama Mrishta Salile Vinimagna Sangha
Here Arjuna is remembering how just by eating Saka Nana system, Saka Anna system, Abasista means what was remaining back. यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान के महाप्रसाद का सेवन, जो शाक अन्न उनका छोड़ा हुआ था, उसका सेवन करने के कारण Yono Jugopa Bana Etya Duranta. When we had gone to forest, then Duruvaso Arirachita, our enemy Duryodhan, created a plan to send Durvasa Muni. और बता रहे हैं कि जब हम वन में स्थित थे, उस समय हमारे शत्रु दुर्योधन ने दुर्वासा को हमारे पास भेजा था। And he came and begged to us in a time where we could not have offered him anything. और वह हमारे पास ऐसे समय में आए जब हम उनको कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते थे। And Krishna appeared and Saka Anna system upayuja. He took our sister, whatever remaining little bit, the sak, and he took it, and yatas trilokim, he satisfied the three lokas just by taking little sak. और उस समय कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और बचे हुए अन्न का एक कण प्राप्त करके लेकर उन्होंने पूरे त्रिलोक को संतुष्ट कर दिया। Sakanna system upayuja yatas trilokim triptam. Krishna just took one saka and satisfied the three worlds. और भगवान कृष्ण ने केवल एक शाक को लिया और पूरे त्रिभुवन को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। This is spoken by someone who has gone through the greatest failure in life. यह उसके द्वारा बोला जा रहा है जो जीवन में सबसे बड़ी विफलता से अभी मुकाबले में हुआ। If this is what Arjuna is speaking in depression, what would Arjuna speak when he is in great jubilation? तो ये अर्जुन तब बोल रहे हैं जब अवसाद की अवस्था में है। यदि वो प्रसन्नता की अवस्था में होते तब वो क्या बोलते कि आप For all of us, even if there is the moments of greatest jubilation, we forget Krishna. But for Arjuna, he is going through greatest failure, depression, but he is remembering Krishna and is grateful for all the gifts that Krishna has given him. और हम जब महान प्रसन्नता की अवस्था में होते हैं तब भी भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं। और वही अर्जुन है जो महान अवसाद की अवस्था में, दुख की अवस्था में है, फिर भी भगवान द्वारा दिए गए महान उपहारों को वो यहाँ पर याद कर रहे हैं। It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of Lord Shiva and his wife. और यह उनकी कृपा के कारण ही था कि मैं भगवान शिव और उनकी पत्नी जैसे व्यक्तित्व को भी मैं प्रभावित कर Thus, पाया। Lord Shiva became pleased with me and awarded me his own weapon, Pasupati Astra. और इससे भगवान शिव मुझसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने पशुपति अस्त्र मुझे प्रदान किया। Other demigods also presented all the weapons to me. In addition, I was able to reach the heavenly planets in this present body. और मैं इस शरीर मैं स्वर्ग में जा सका और वहां पर मुझे अन्य देवताओं ने भी बहुत सारे अस्त्र प्रदान किए। When I stayed for some days as a guest in heavenly planets, all the heavenly demigods, including King Indradev, took shelter of my arms, which are marked by Gandiva, to kill the demon Nivata Kavacha. और जब मैं इस प्रकार स्वर्ग में रह रहा था तो वहां के राजा इंद्र भी मेरे भुजाओं की शरण में आए थे, जिस पर गांडीव के निशान बने हुए थे, और मैंने उस असुर को पराजित किया था। O King, at the present moment I am bereft of the Supreme Lord, by whose influence I was so powerful. और हे राजन, मैं भगवान को मुझसे दूर चले गए हैं जिनके कारण मैं इतना शक्तिशाली था। The military strength of Kauravas was like an ocean, कौरवों की जो सेना थी वो एक समुद्र के समान थी, in which there dwelled many invincible existence, और जिसमें बहुत से ऐसे अपराजेय योद्धा थे, and thus it was unsurmountable.
इसीलिए उनको कभी भी हराया नहीं जा But सकता। because of his friendship, I seated on the chariot and was able to cross over it. लेकिन उनकी ही मित्रता के कारण मैं उस रथ पर विराजित हुआ और मैंने सबको परास्त किया। And only by his grace was I able to regain the cows and also collect by force many elements of the kings. और उनके ही कारण, उनकी मित्रता के कारण ही मैंने बहुत सारे गांवों को जीता और बहुत सारे उपहार प्राप्त किए, which were bedecked with jewels and were sources of all brilliance. जिस पर बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे रत्न लगे हुए थे। In this way, Arjuna remembers out of gratitude the wonderful gifts he got throughout his life from Krishna. और इस तरीके से अर्जुन उन सभी उपहारों को याद कर रहे हैं जो उनको अपने पूरे जीवन में भगवान कृष्ण के कारण प्राप्त हुए थे। Sometimes we are so mindless in our lives that we become grateful of a person or some things when these is lost. Sometimes we are so mindless in our lives that we become grateful of persons and situations when they are lost. कभी-कभी हम अपने विवेक को इतना खो देते हैं कि जब वह व्यक्ति और ये वस्तुएं हमारे जीवन से चली जाती हैं, तब हम उनको याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। It is so difficult to find Krishna's connection in our life and become grateful to our Krishna. और यह बहुत कठिन हो जाता है कि कृष्ण के इस संबंध को हम कभी देख पाएं और भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञ हो पाएं। Krishna was personally present with Arjuna. कृष्ण व्यक्तिगत रूप से अर्जुन के साथ उपस्थित थे। And it was so easy for Krishna to interact with Arjuna, and it was so easy for Arjuna to be grateful for Krishna. कृष्ण के लिए अर्जुन से इस प्रकार से व्यवहार करना बहुत आसान था और अर्जुन को भी उनके प्रति कृतज्ञ होना भी बहुत आसान था। The greatest challenge in our life is Krishna is not directly visible in front of us. और हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण यही है कि भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में उपस्थित नहीं है, because of which there is so much of chance to forget him. और यही कारण है कि बहुत ऐसा मौका बनता है कि हम भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं। We are so grateful in our life, but our gratitude never ends with Krishna. तो हम बहुत कृतज्ञ होते हैं जीवन में, लेकिन कभी भी हमारा जो कृतज्ञता है वो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाती है। In the third meditation that we did in the morning, we discussed of how to connect Krishna with all the gifts that we have got in life. प्रातः काल में जो तृतीय ध्यान हमने किया था, उसमें हमने यह सीखा था कि किस प्रकार से प्रत्येक कृतज्ञता को हम भगवान कृष्ण से जोड़ सकते हैं। Srila Prabhupada always saw Krishna in his life. श्रील प्रभुपाद ने हमेशा भगवान कृष्ण को अपने जीवन में देखा। He was really wanting a ticket to go to West to fulfill the mission of his spiritual master. और उनको पश्चिम में जाने के लिए एक टिकट की आवश्यकता थी ताकि वो अपने गुरु द्वारा दिए गए इस मिशन को पूरा कर सकें। He was working so hard, going to different places and going to Mumbai and the office of Srimati Moraji and sitting outside the office to get a ticket. और वो इतना प्रयास कर रहे थे, मुंबई जाते थे, श्रीमती मुरारजी के कार्यालय के बाहर बैठे रहते थे ताकि उन्हें जाने के लिए टिकट मिल जाए। An old man of 70 sitting on the staircase of the Scindia steamship company just to get a ticket. और वो 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के कार्यालय के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहता था।
Finally, Srila Prabhupada got a ticket. और अंततोगत्वा श्री प्रभुपाद को एक टिकट प्राप्त हुआ. And Srila Prabhupada writes in his Jaladuta diary that I thank Krishna for inspiring Srimati Moraji for giving me a ticket to fulfill the mission of my Guru. श्री प्रभुपाद अपनी जलदूत डायरी में लिखते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने श्रीमती मोरारजी को प्रेरित किया कि वो मुझे ये टिकट प्रदान करें. Srila Prabhupada didn't think that it was because I did so much of endeavor, it was because I was sitting and waiting for the ticket that I got the ticket. और श्री प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे अथक प्रयासों के कारण हुआ कि मैं उनके कार्यालय के बाहर बैठा रहता था, प्रतीक्षा करता रहता था, जिसके कारण श्रीमती मोरारजी ने मुझे टिकट दिया हो. Srila Prabhupada was also not thinking that it was the kindness and generosity of Srimati Moraji to grant him a ticket. श्री प्रभुपाद ये भी नहीं सोच रहे थे कि ये श्रीमती मोरारजी की दयालुता थी और उनकी विनम्रता थी कि उन्होंने मुझे ये टिकट प्रदान किया. Srila Prabhupada saw Krishna's connection in every walk of his life. श्री प्रभुपाद ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान कृष्ण के दर्शन किए. He invested so much of his finances for creating a beautiful business, pharmaceutical business. और उन्होंने अपने जीवन का सारा जमा पूंजी उन्होंने अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को खड़ा करने के लिए लगा दी. So that he can maintain his family. ताकि वो अपने परिवार का खर्च चला सके. And that was burned down to ashes. लेकिन उसको भी राख कर दिया गया. And Srila Prabhupada saw the Krishna connection and was grateful that Krishna wants me to do something else. श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के संबंध को वहां पर भी देखा और उन्होंने समझा कि भगवान कृष्ण मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं. Srila Prabhupada was distributing Back to Godhead magazines on the roads of Delhi on the summer of June and July. When he was posting, the postmaster said, Swamiji, why do you distribute these magazines? People will throw it off. श्री प्रभुपाद जून जुलाई की भीषण गर्मी में दिल्ली की सड़कों पर बैक टू गॉडहेड मैगजीन बांटते थे और जब पोस्टमास्टर के पास वो गए उसको पोस्ट करने के लिए तो पोस्टमास्टर ने कहा कि स्वामी जी आप इन मैगजीन्स को क्यों बांटते हैं? लोग इनको पढ़ने के बाद फेंक देंगे कूड़े के डिब्बे में. Why don't you write books and publish books? They will keep it in library forever. उन्होंने कहा कि आप पुस्तक क्यों नहीं लिखते? क्योंकि पुस्तक लोग नहीं फेंकेंगे, उसको अपने पुस्तकालय में सजा कर रखेंगे जीवन भर. Srila Prabhupada saw the Krishna's connection and said, my Guru and Krishna, they are instructing me to write books and publish them. श्री प्रभुपाद ने वहां पर भी गुरु और कृष्ण के संबंध के दर्शन किए कि मेरे गुरु और कृष्ण चाहते हैं कि मैं पुस्तकें लिखूं. With so much of struggle in New York, in Boston, in Pennsylvania, Srila Prabhupada was struggling so much. And finally, with so much of struggle from 1965 to 1966, finally some American hippies got inspired to help Srila Prabhupada. श्री प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, पेंसिल्वेनिया में इतना संघर्ष किया और अंत में जाकर 1965-66 तक संघर्ष करने के बाद कुछ हिप्पी जो अमेरिका के थे वो उनके साथ जुड़ने लगे. One day Srila Prabhupada was so frustrated that nothing is happening. I've been attacked by the drug addicts and nothing is happening. He went to the Tompkins Square Park. और एक बार श्री प्रभुपाद इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि कुछ नहीं हो रहा है, ड्रग एडिक्ट लोग मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस अवस्था में श्री प्रभुपाद टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में चले गए. And Srila Prabhupada was chanting with so much of desperation, closing his eyes, that if today nothing happens, oh Krishna, I'm going to leave this land
without doing anything for my Guru. तो श्रील प्रभुपाद इतनी असहाय अवस्था में थे और उस असहाय अवस्था में वो वहां पर नाम कीर्तन कर रहे थे और सोच रहे थे कि अगर आज भी कुछ नहीं होता तो मैं वापस चला जाऊंगा। And with 3 hours of constant chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So with constantly chanting, Srila Prabhupada opened his eyes and saw such drug addict boys and girls dancing around him. और 3 घंटे तक लगातार कीर्तन करने के बाद श्री प्रभुपाद ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनके चारों ओर ड्रग का नशा करने वाले हिप्पी लोग समूह बनाकर खड़े हुए थे और नाच रहे थे। And Hayagriva Swami, Mukunda Goswami, Shyam Sundar Malati, they all joined the movement and arranged a small garage where the first ISKCON temple was created. तो हयग्रीव स्वामी, मुकुंद गोस्वामी, श्याम सुंदर और मालती उन सभी ने मिलकर श्री प्रभुपाद के लिए एक छोटा सा गराज ढूंढा और वहां पर उनके कार्यक्रम आयोजित करने लगे। In the 26th 2nd Avenue, New York, the first ISKCON temple was incorporated by the hippies of the Haight-Ashbury. 26 2nd Avenue में ISKCON के पहले मंदिर की स्थापना हुई हिप्पीज के द्वारा। And just within matter of moments and months, one temple was getting created every month. और कुछ ही महीनों में एक ही महीने के बाद एक महीने के अंतर पर एक मंदिर खुलता जा रहा था। There was a temple in San Francisco and there was a Rath Yatra happening there. And then 3 couples went to London. तो सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर खुला और वहां पर रथ यात्रा हो रही थी। फिर 3 गृहस्थ वो लंदन गए। And in London they met George Harrison. और लंदन में वो जॉर्ज हैरिसन से मिले। And George Harrison was so inspired by hearing the voice of Yamuna Mataji that he said that we must make a Apple record out of it. और जॉर्ज हैरिसन यमुना माता जी की आवाज से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि हमें एक एप्पल रिकॉर्ड बनाना चाहिए आपकी गायन में। For the first time in the world, Hare Krishna Mahamantra was recorded in a studio which was the Apple Records of the Beatles. और इस संसार में पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का रिकॉर्डिंग किया गया एप्पल बीटल्स के एप्पल रिकॉर्ड्स के स्टूडियो में। It broke all the records of the Apple Records. और इसने एप्पल रिकॉर्ड्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। In just moments, it became so viral, without internet, without WhatsApp, without Instagram, that the whole world started chanting Hare Krishna. कुछ ही क्षणों में कि बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी इंस्टाग्राम के, बिना किसी सहायता के ये इतना बड़ा हिट हो गया कि सारा संसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा। Srila Prabhupada is now the guru of George Harrison. क्योंकि श्रील प्रभुपाद अब जॉर्ज हैरिसन के भी गुरु बन गए। George Harrison was so famous that when he used to go to a hotel and use the napkin, those napkins would be sold in thousands of dollars.
ये जॉर्ज हैरिसन इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि जब वो किसी होटल में जाके एक नैपकिन यूज कर लेते थे तो उस नैपकिन को बेचकर हजारों डॉलर्स कमाए जाते थे। And Srila Prabhupada is now the spiritual master officially of George Harrison. और श्रील प्रभुपाद आधिकारिक रूप से जॉर्ज हैरिसन के गुरु बन चुके थे। And George Harrison comes to Srila Prabhupada and says, Swamiji, please initiate me. और जॉर्ज हैरिसन श्री प्रभुपाद के पास आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। George Harrison was here. We have the Beatles ashram in Rishikesh where all his friends were inspired by Maharishi Yogi. और जॉर्ज हैरिसन बीटल्स का एक कार्यालय यहाँ पर है। जब बीटल्स का एक ग्रुप महर्षि योगी के द्वारा प्रभावित था। So George Harrison was not inspired. He was looking for someone else. जॉर्ज हैरिसन इंस्पायर प्रेरित नहीं थे लेकिन किसी गुरु की तलाश में थे। So George Harrison comes down to Srila Prabhupada and he comes to London. And Swamiji, I want to get initiated. तो जॉर्ज हैरिसन श्री प्रभुपाद के पास आए। जब वो लंदन आए कि प्रभुपाद मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। Can you imagine? I can't imagine. कल्पना कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते। And Srila Prabhupada said, what you are doing, you continue doing. You don't need to get initiated. श्री प्रभुपाद ने कहा, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। With all this fame that Srila Prabhupada got, an iota of pride didn't touch Srila Prabhupada's heart. और ये सब जो यश श्री प्रभुपाद को प्राप्त हुआ, उसके कारण तनिक सा भी उन्हें अहंकार नहीं हुआ। Srila Prabhupada would cry in front of his disciples and fold his hands and pray to them that my Gurudev and Krishna has sent all of you American and European boys and girls to help me fulfill Krishna's mission. श्री प्रभुपाद रोते थे अपने शिष्यों के सामने और हाथ जोड़कर कहते थे कि आपको मेरे गुरु महाराज ने, आप सभी अमेरिकन लड़कों लड़कियों को मेरे गुरु महाराज ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं कृष्ण के मिशन को सफल करा सकूं। The 6 couples, the 3 couples, the 6 of them, Mukunda and Janaki, Gurudas and Yamuna, and Shyam Sundar and Malati. Yamuna and Janaki were sisters. तो ये 3 जो युगल थे उसमें जानकी और मालती ये दोनों बहनें थीं। Janaki, she was serious, but when Srila Prabhupada came to India, after that, because of the connections and material connections, she became weak in Krishna consciousness. तो जानकी जब वो प्रेरित थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो उनके पुराने उनके जीवन के संबंधों के कारण वो थोड़ा कमजोर पड़ गई। When Srila Prabhupada returned, Janaki came to Srila Prabhupada and said, I am not going to practice bhakti anymore. जब प्रभुपाद से मिली तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि मैं भक्ति का और अभ्यास नहीं करना चाहती हूँ। Yamuna Devi recounts, Srila Prabhupada had tears streaming from his eyes like rains just by hearing the word that Janaki does not want to practice bhakti. और यमुना माता जी याद करती हैं कि जब श्री प्रभुपाद ने ये सुना कि जानकी भक्ति नहीं करना चाहती है, श्री प्रभुपाद की आंखों से अश्रुधारा वर्षा की तरह बहने लगी। And Yamuna says, she is my sister and I felt no love for her. That Srila Prabhupada, an apparent stranger in her life, felt compassion to her. यमुना देवी कहती हैं कि जानकी मेरी बहन थी, लेकिन
श्रील प्रभुपाद जो उनके लिए प्रेम दिखा रहे थे वो मेरे अंदर भी नहीं था। Srila Prabhupada expressed to Janaki, Krishna has sent you and all of you to help me in my mission. श्रील प्रभुपाद ने जानकी को कहा कि भगवान कृष्ण ने आप सभी को मुझे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करने के लिए भेजा है। I am simply handicapped without all of your help. और मैं आप सबकी सहायता के बिना मैं एक अपाहिज हूँ। Srila Prabhupada saw Krishna's connection in his failure when the greatest of the business he started ended up in fire, and Srila Prabhupada saw the greatest success that he got, also the Krishna's connection. श्रील प्रभुपाद ने जब उनको महान असफलताएं मिली, उनका बिजनेस जब पूरी तरह धराशायी हो गया, तब भी उन्होंने कृष्ण के संबंध के दर्शन किए, और जब वह पूरी तरह सफल हो गए, वहां पर भी उन्होंने कृष्ण के संबंध के दर्शन। Srila Prabhupada was grateful for the failures and he was grateful for the success. श्रील प्रभुपाद अपनी असफलताओं के लिए भी कृतज्ञ थे, अपनी सफलताओं के लिए भी कृतज्ञ And थे। Srila Prabhupada saw everyone as an expression of gratitude to Krishna. और श्रील प्रभुपाद ने प्रत्येक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के रूप में, उसकी अभिव्यक्ति के रूप में देखा। We are so fortunate to come and learn about Srila Prabhupada's life. हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक साथ यहाँ जुड़े हैं और श्रील प्रभुपाद के जीवन के बारे में जान रहे हैं। To get some opportunity to serve in his birthplace in Calcutta. और हमें अवसर मिला है कि कलकत्ता जो कि उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर हम उनकी सेवा कर सकें। In 1997, when Srila Prabhupada was so sick and still wanting to do something, do some preaching, he came from Vrindavan, Delhi to Mumbai. और जब 1977 में श्रील प्रभुपाद बहुत बीमार थे, तो वहाँ तब उस अवस्था में भी वो दिल्ली से मुंबई आए। And again his health got down and he had to be rushed again back to Delhi to Vrindavan. और जब उनकी तबीयत और खराब हो गई, तो उन्हें वापस दिल्ली से वृंदावन ले जाया गया। And George Harrison and Srila Prabhupada was not knowing that he will survive and ever meet George Harrison again. तो श्रील प्रभुपाद को पता नहीं था कि वो बच भी पाएंगे कि नहीं, और फिर कभी जॉर्ज हैरिसन से मिल पाएंगे कि नहीं। One devotee had come to meet Srila Prabhupada in Mumbai station. Srila Prabhupada took out his ring and said, "Give it to Sriman George for all the things that he did for me and for my Guru." श्री प्रभुपाद जब मुंबई में थे, तो उनसे एक भक्त मिलने आए, और श्री प्रभुपाद ने अपनी अंगूठी को उतार कर दिया और कहा कि ये श्रीमान जॉर्ज को दे दीजिए, उनकी सारी सहायता के लिए जो उन्होंने मेरे गुरु महाराज के मिशन के लिए मेरी सहायता की। Srila Prabhupada saw George Harrison as an instrument of his Guru and Krishna. श्रील प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को अपने गुरु और कृष्ण के एक उपकरण के रूप में देखा। Srila Prabhupada saw everyone in relation with Krishna, but we are so mindless that we are not able to see Krishna in connection with Krishna. श्रील प्रभुपाद प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण से जोड़कर देखते थे, और हम इतने अविवेकी हैं कि हम कृष्ण को भी कृष्ण से जोड़कर नहीं देख पाते हैं। Let us chant this wonderful prayer that Srila Prabhupada wrote in Jaladuta. Praying to Srila Prabhupada and expressing our gratitude to Srila Prabhupada for all that he has given us in our life. तो आइए हम उस प्रार्थना को गाते हैं जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी थी, श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हुए।
Krishna Tapa Punya Habe Everyone loudly. Krishna Tapa Punya Habe पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे ध्रुवादी बोली তোমার Everyone Krishna Tapa Punya Habe Bhai Punya karibe jabe Radha Rani khushi hobe Punya karibe jabe Radha Rani khushi hobe Dhruvaati boli Krishna Tapa Punya Habe Punya karibe jabe Radha Rani khushi hobe Everyone loudly Punya karibe jabe Radha Rani khushi hobe Dhruvaati boli tomata Srila Prabhupada writes, Oh brothers, oh brother, Srila Prabhupada in this song is addressing Krishna as his brother. श्रील प्रभुपाद इस गाने में भगवान कृष्ण को अपने भाई के रूप में संबोधित कर रहे हैं Srila Prabhupada is telling Krishna, Oh my brother Krishna, do you know that Srimati Radharani will be happy? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हे कृष्ण मेरे भाई आपको पता है कि राधा रानी कितनी प्रसन्न होंगी If you help me to serve my Guru, Radharani will be happy with you. यदि आप मुझे मेरे गुरु की सेवा करने में सहायता करेंगे तो राधा रानी आपसे प्रसन्न होंगी This is transcendental pride that we can give to Krishna. तो ये एक दिव्य घूस है जो हम कृष्ण को दे सकते हैं Sri Siddhanta Saraswati Sachi Sutta Priyati Krishna Seva Jara Tulana से महंत गुरु जग तेरे माथे उरु Everyone कृष्ण भक्ति देखाय Srila Prabhupada is telling Krishna, his brother, that Sri Siddhanta Saraswati Thakur, my Gurudev, he is very dear to you. He is very dear to Lord Chaitanya. And he is unparalleled in serving you. श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे भाई कृष्ण श्री सिद्धांत सरस्वती भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपके भगवान चैतन्य के बहुत प्रिय हैं और कृष्ण की सेवा में उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता
And he is actually giving Krishna Bhakti in different places. और वो अलग-अलग स्थानों पर कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तारो इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थाय थाय। होंचाते कोला मेरा पृथ्वीते नगरादि आशा मुद्रा नादनादि सकलये लये कृष्ण नाम। Srila Prabhupada is telling that it's not I who am I going to preach in this America. It is the desire of my spiritual master which is so strong that Lord Chaitanya's name will spread far and wide in the Western countries. और ये मैं नहीं हूँ जो पश्चिम में जाकर प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरे गुरु महाराज की शक्तिशाली उनकी इच्छा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम सारे संसार में गाया जाएगा। यह उनकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। I am not so powerful, Krishna, but the desire of my Guru is so powerful that this is going to happen. मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कृष्ण, लेकिन मेरे गुरु की जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। And if you assist me, because my Guru is so confidential servitor of Srimati Radharani, and because if you help me and my Guru, Srimati Radharani will be pleased with you. और इसलिए यदि आप मेरी सहायता करते हैं, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमती राधा रानी के बहुत प्रिय हैं, तो श्रीमती राधा रानी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। ताहले आनंद होय तबे होय इति जय। ताहले आनंद होय तबे होय इति जय। चैतन्यर कृपा अतिशय। माया दुष्ट जप दुखी जगते सबाए दुखी। वैष्णवेरं इच्छा पुण्य हो। The only can these kids be made quiet? अभी बच्चे शांत हो जाइए, बाद आप चलिए खेल लीजिए। The only happiness that I saw in the face of Bhakti Siddhanta was when holy name will spread throughout the world. And प्रसन्नता मैंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चेहरे पर देखी कि भगवान का पवित्र नाम पूरे संसार में गाया जाएगा। And everyone will receive the mercy of Chaitanya. और प्रत्येक व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। And they will be relieved from the wicked witch of Maya. और वो माया की जो जादूगरनी है उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। से कार्य करी बारे आज्ञा देती दिला मोरे। योग्य नाही आमी अतिथि। ताई से तुम्हारा कृपा मांगी देती अनुरूपा। आज तुम्हें सवार प्रवीणा।
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave me this service. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मुझे ये सेवा दी है, Gave me this instruction. मुझे ये निर्देश दिया है। But I am simply fallen and I am not at all qualified to do this service. लेकिन मैं पतित हूँ और मैं इस सेवा को करने के लिए पूर्णतः अयोग्य हूँ। And because I am so fallen, that's why I am asking for your favor, oh my brother Krishna. और क्योंकि मैं इतना पतित हूँ, इसीलिए मैं आपसे मेरे भाई कृष्ण आपसे सहायता मांग रहा हूँ। Because I know you, Krishna, you are expert in every field. क्योंकि मैं जानता हूँ कृष्ण, आप प्रत्येक क्षेत्र में दक्ष हैं। तुम्हारा से शक्ति खेले, गुरु से पर वस्तु मिले। जीवन सार्थक यदि से सेवा पाइले ताहले सुखी हले। तबे संगे भाग्य देवी If I get empowered by you, then only I'll be able to serve my Guru. और यदि आप मुझे शक्ति प्रदान करेंगे, तभी मैं अपने गुरु की सेवा कर पाऊंगा। जीवन सार्थक होय. And if I serve my Guru, then my life's goal will be fulfilled. और यदि मैं अपने गुरु की सेवा कर पाऊंगा, तब मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। And if I am able to make my Guru happy, then I will definitely get your association in Sri Vrindavan Dham. और यदि मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर पाऊंगा, तो वृंदावन धाम में मुझे आपका संग प्राप्त हो पाएगा। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे। कामाभिकाममनुया प्रपतं प्रसंगा। कृत्वात्मशासुरशिनो भगवान् गृहीता। सोऽहं कथं न विशिजे तव भृत्य सेवा। Prahlad Maharaj prays that I have been fallen in this deep dark well of material existence. प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि मैं इस भौतिक संसार के अंधे कुएं में गिर गया हूँ। But, oh my Lord Narsimhadev, your dear servant Narad Muni picked me up. लेकिन प्रिय नरसिंहदेव, आपके प्रिय भक्त नारद मुनि ने मुझे उठा लिया है and made me exactly like him, a pure devotee. और मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है, एक शुद्ध भक्त। How can I not serve him? और मैं कैसे उनकी सेवा न करूं? Please empower me, O Lord Narsingadev, so that I can serve my Guru eternally. तो मुझे शक्ति प्रदान कीजिए नरसिंहदेव कि मैं निरंतर अपने गुरु की सेवा करता हूँ। Srila Prabhupada is begging Krishna for empowerment so that he can serve his Guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. श्रील प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको उनके गुरु की सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करें। And by pleasing his spiritual master, he is having the conviction that he will get the darshan of Krishna. और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अपने गुरु को प्रसन्न करके उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारा मिलने भाई आपारस तुमी मोर कीरा साथी भूलिया माया रो लाठी।
নয়ে সুযোগ যদি হয়ে যোগাযোগ তবে পারি তুহে মিলিবারে তোমার মিলনে ভাই আবার সে সুখ পায় গোচারণে ঘুরে দুই নম্বরা কত বনে চুটা চুটি বনে খায় লুটা ফুটি সেই দিন কবে হবে মরা Oh my brother Krishna, you are my eternal master, but forgetting you, I have been getting the kicks of material energy, life and life and life after life. कृष्ण, आप मेरे भगवान हैं और आपसे दूर होकर मुझे माया की लातें पड़ रही हैं। But I am simply praying to you, O my Lord, that I am wanting to again reunite with you in Sri Vrindavan Dham. लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मैं आपसे फिर श्री वृंदावन धाम में मैं फिर से मिलना चाहता हूँ। I want to roll around in Vrindavan, the forest of Vrindavan, along with you. और मैं वृंदावन के जंगलों में फिर से आपके साथ लौटना चाहता हूँ। I want to dine with you in the forest of Vrindavan. और मैं आपके साथ वृंदावन के जंगलों में भोजन करना चाहता I हूँ। want to run behind you in Vrindavan. और आपके पीछे भागना चाहता हूँ। Oh Krishna, when those days will be again mine. हे कृष्ण, फिर से कब ऐसा हो पाएगा? आज से सुविधा ने तुम्हारा शरण मिला बड़ो आशा जापिला माता আমি তোমার নিত্য দাস তাই করি এত আজ তুমি বিনা অন্য গতি Oh brother Krishna, today is a very fortunate day because I remembered you. मेरे भाई कृष्ण, आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि मैं आपको याद कर रहा हूँ। But I am expressing a very, very great desire to you. लेकिन मैं आपसे एक बहुत बड़ी इच्छा मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ। But since I am your eternal servant and you can do everything for your servants, and I have no one except you, please fulfill this desire of mine. क्योंकि आप मेरे भगवान हैं और आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है, तो मेरी इस इच्छा को पूरी कीजिए। Krishna Tava Priya Have এই পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে everyone এই পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে যুবতী বলি তোমার কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে এই পুণ্য করিবে যবে রাধা রানী খুশি হবে এই পুণ্য করিবে
যাবে রাধা রানী খুশি হবে 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 এ পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে বাপি বলি কমলায় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Prabhupada ki we are eternally grateful to Srila Prabhupada for all the gifts that he has given us. हम श्रील प्रभुपाद के निरंतर कृतज्ञ हैं कि उन सभी उपहारों के लिए जो उन्होंने हमें दिए हैं And the greatest gift that Srila Prabhupada has given us is an example of how to be grateful in life in all situations. और सबसे बड़ा उपहार जो श्री प्रभुपाद ने हमें दिया है वह यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षण किस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रह सकते हैं Though we are so much in the consciousness of have not, if we remember Srila Prabhupada and pray to him, he will bless us to be in the consciousness of I have so much given by Krishna. यद्यपि हम इस चेतना में रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हम श्री प्रभुपाद से भी प्रार्थना करें तो हम इस चेतना में जा सकते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। Srila Prabhupada saw Krishna's connection at all times in his life, and tomorrow in the morning we will hear about Mother Ganges. श्री प्रभुपाद ने हर परिस्थिति में भगवान के संबंध के दर्शन किए और कल सुबह हम माता गंगा के बारे में भी श्रवण करेंगे To understand how we can also see Krishna's connection at all times in our life. यह समझने के लिए कि कैसे प्रत्येक क्षण हम भी भगवान कृष्ण के संबंध को अपने जीवन में देख सकते हैं I welcome all of you for tomorrow's morning katha about Mother Ganges and her descent to the earth. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कल के माता गंगा के किस प्रकार माता गंगा इस संसार में आई इस कथा का श्रवण करने के लिए Thank you very much. Now we'll have dancing kirtan. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki जय Srimad Bhagavad Puran ki जय Nitai Gaur Premanande